Good evening, all of you. This is Rakesh Markandia, lecturer in physics. Welcome to a new lecture of magnetism and matter. That is lecture number 5. In this lecture, we discuss two important content in this chapter. The first content is torque acting on a magnetic dipole in a uniform magnetic field. And the second content is potential energy of a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Let us consider a uniform magnetic field which is parallel to the plane of paper and directed left to right, and B with the magnetic field intensity. Consider a bar magnet having pole strength M is placed in an uniform magnetic field. N with the north pole of the bar magnet, S with the south pole of the bar magnet, 2L with the length of dipole, and theta with the angle made by the dipole with the magnetic valence. We know that magnetic field intensity is defined as magnetic force per pole strength. So, magnetic force, the magnitude of magnetic force or magnetic force is simple MB. Here, M be the pole strength of the bar magnet, that is north pole and south pole having equal pole strength, that is M, and the magnetic force becomes F equals to MB, force is a vector quantity. So here MB acting on the north pole and MB also acting in the south pole. Remember that a couple of forces is a pair of forces having same magnitude but opposite in nature. Here, MB force and MB force having equal magnitude, but the direction is in opposite. One is left one, other is in right one. So, these two forces are called as the couple of forces which tends to rotate the dipole. And this is known as torque. Torque means the rotation of a dipole by the couple of forces is called as a torque. And here we discuss about this type of a torque. Let us join BM or BM be the perpendicular distance. Theta the angle. So from the right angle angles AVM, from the right angle angles AVM, we have sin theta equals to perpendicular by hypotenuse, and your perpendicular is the BM and then hypotenuse H will be AV. And we have sin theta equals to VM, it will be 2L, the perpendicular distance, that is BM equals to 2L. We know that the magnitude of a torque is the product of magnitude of either forces, into perpendicular distance.
here the tau, the magnitude of either forces will be force F equals to mv into perpendicular distance, and the perpendicular distance is bn, and the value of bn is 12 centimeter. 12 centimeter. When we realize them, we have tau equals to m into 12 becomes 1 ton and v centimeter. And we know that magnetic moment, and we know that magnetic moment m equals to constant into length of diagram. And the direction of a magnetic moment is from south pole to north. The direction of magnetic moment is from south pole to north. South pole to north. So m into 12 becomes magnetic moment m and v centimeter. We know that if a be a vector and b be a vector, when a cross is operated between a vector and b vector, we have a b sin theta. We have a b sin theta. The magnitude of a plus b will be a b sin theta. So mb sin theta tau equals to is the cross product of magnetic moment and the magnetic field intensity. Remember torque acting on an electric dipole in a uniform electric field will be tau equals to P cross T, that is equals to P centimeter. In case of electric field, we have E be the field intensity and P be the dipole moment in electric dipole, and here B be the magnetic field intensity and M be the magnetic moment or magnetic dipole moment. So the formula of a torque or the torque acting on a dipole is tau equals to m plus b, and tau is a vector, and the direction of a torque can be, we know that since torque is a vector quantity, it has the magnitude and direction, and the magnitude of a torque is mv sin theta, and when we apply cross product rule or right-handed screw rule or right-handed thumb rule, when we apply right-hand thumb rule, we know the direction of a torque. According to the right-handed thumb or right-handed thumb rule, it states that right-handed thumb rule states that if we call the fingers of right hand, keeping the thumb is erect, then the direction of A cross B, or the vector is the rotation of the fingers from the smaller angles, that is A to B. सीधा सड़क रूपे राइट हैंड थंब कौन कहूची कोच इमेजिन कर तुम राइट हैंड ए जो आंगुठी गुड़ाक अच्छी ये तुम मोड़ी हो जाए आउ तुम थंब को सीधा रख इरेक्ट सीधा रख जदि मोड़ी हो जाए आंगुठीटा ए आउ बी ए गोटे वेक्टर्स हुए बी गोटे वेक्टर्स हुए जदि ए आउ बी रो स्मॉलर एंगल ले जाए तार थंब फिंगरटा हमको ए क्रॉस बी रो डायरेक्शन जाने ता माने हम सीधा सड़क देखिले जदि ए क्रॉस बी टा एंटी क्लॉकवाइज जाउछ जदि ए टू बी जदि तुम ए टू बी पुणी केमती जीव ना टू द स्मॉलर एंगल जो एंगल टा छोटो जीव जदि तुम ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज जाउछ ताल ए क्रॉस बी ता तमर अपवार्ड हो बा जदि तुम ए टू बी क्लॉकवाइज जाउछ तुम ए क्रॉस बी टा करबो ना डाउनवर्ड ताहले अब स्क्रीनशॉट ले जा दिस इज द टॉप और स्क्रीनशॉट ले जा
magnetic field is directed left to right. This is the direction of magnetic field, and this is the direction of magnetic moment, because of the magnetic dipole moment. Because the direction of a magnetic dipole moment is from south pole to north pole. So south pole to north pole. So this is the direction of a magnetic moment and the direction of a magnetic field. Here the formula for torque is tau constant plus p. Tau का vectors, then direction होची. आप हम जो पढ़ते हो n cap पढ़ते हो. N cap shows the direction of magnetic. N cap shows the direction of a cross p. तो एक जगह है जो a root कितने जाऊँगी? ये थीटा. Small angles से जी. देखो ये two angles. फिर ये angles larger angles. हमें सब small angles से जीवा. और जो small angles से निकली, वो थीटा का कौन बोले? तो अपना anti-clockwise बोले. Anti-clockwise बोले. Sorry. इतना clockwise बोले. जेहेतु ना मु clockwise जाऊँगी, मते right handed कौन कहूँगी? जे जब मोड़ी है जे कितना आंगुल एक प्लस फिर डायरेक्शन जोड़ा है, ताहले थंब का जोड़े वो एक को भी जो डायरेक्शन जोड़ा है, ता थंब जोड़े वो प्लस p. ताहले देखो ये clockwise डायरेक्शन डाउनवर्ड. तो डायरेक्शन ऑफ torque is डाउनवर्ड. तो तुम्हें m to b clockwise करे torque डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा. जो तुम्हें m to b एंटी क्लॉकवाइज थांको ता torque डायरेक्शन पड़े ना अपवर्ड. तो यहाँ डायरेक्शन पार्ट जाने पे हम राइट हैंडेड थंब रो अप्लाई करो. যদি हम a to b क्लॉकवाइज ଯିବା डाउनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड. अब मार्किंग टू फार्मूला होची तार पास टू एमपी साइन. द स्क्रीनशॉट ले जाओ. Yes. Now we are going to discuss about potential energy of a magnetic dipole in a uniform electric field. Potential energy of a magnetic dipole in a uniform magnetic field. Similar, consider a bar magnet having pole strength M placed in a uniform magnetic field having intensity V, 12 with the length of dipole, theta with the angle, and M with the dipole moment, which is directed south pole to north pole. The work is done here. The work is done against the action of a torque. এই জায়গায় যে টর্কটা পড়ুছি, টর্কটা যে পড়িবা ফলে এই ডাইপোলটা কোন হচ্ছে না মুভ করছে. তো টর্কটা পড়িবা ফলে যেহেতু ডাইপোলটা মুভ হচ্ছে, মুভ হলা মানে সে কিছু ওয়ার্ক করে, and that work is stored in the dipole, and this energy or this work is known as a potential energy. যদি কোশ্চেন আসে যে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কোন ভাষা ডাইপোল এটা কোন ভাষা ডাইপোল র পোটেনশিয়াল এনার্জি বিষয় আমি কুহ যে ডাইপোল র এই জায়গায় পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কোন ভাষা তো তুমি সেটা সঙ্গে পাইব ডাইপোল তা যেতବେଳେ ম্যাগনেটিক ফিল্ড উপর রହୁଛି তারপর কিছু টর্ক পড়ছি আর সেই টর্কটা কেতে জানে সেই টর্কর ম্যাগনিट्यूड হলা p sin থিটা. টর্ক অ্যাক্টিং হবা ফলে এই কিছু ওয়ার্ক করে আর जो ওয়ার্ক কলা সেটা ডাইপোল ভিতরে এনার্জি হিসাবে স্টোর হয়ে গেল. And this energy is known as potential energy or work, and potential energy or work is defined as the tau dot b. देखो हम नॉर्मली वर्क में फॉर्मूला करछु तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, किंतु जेतबेले लिनियरली मोशन होची तबे से जगह को फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जब गोटे ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन करछि सेतबेले फोर्स का हमर टॉर्क हो जाए और डिस्प्लेसमेंट का हमर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए. अब डॉट प्रोडक्ट मार्क पड़ी जहां पर कि ए टाउ जो तुम स्मॉल एंगल्स न बोर्ड वर्क का स्मॉल हो then small work dot d dot कौन ना tau d थीटा. सिंपल वर्क का फॉर्मूला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, किंतु ये लिनियर मोशन पाए जो ऑब्जेक्ट लिनियरली मोशन करछि. যদি रोटेशनल मोशन हुए रोटेशनल मोशन रे से जगह फोर्स का टॉप है जे आउ डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जे सेति में फॉर्मूला पहले d dot इक्वल्स टू tau d. तबे tau का कॉमन फॉर्मूला मतलब tau का मतलब p is sin theta, the p is sin theta into d theta. When we integrating the value equation and putting the proper limit, we
when we integrating the above equation and putting the proper limit, so p is sin theta d theta and limits to be theta 1 to theta 2. Here dw will be 0 to w, p constant, the simple integration of sin theta d theta, and we know that the integration of sin theta is minus cos theta and limits theta 1 to তাহলে আমরা লিখি পারি কোন নাইবা upper limit minus lower limit and w minus 0 will be w, the minus বাহার পাসলা the minus pe, it is of cos of theta জায়গায় তো upper limit minus lower limit the মানে cos theta 2 minus cos theta 1. तो ये तो मतलब आपने कोना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये तो आपने फॉर्मूला का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. consider theta 1 equals to 90 degree and theta 2 equals to simple theta. মানে যে আমরা যে theta 1 পাইছি theta 1 টা 90 ডিগ্রি আসুন করছি আর theta 2 সিম্পল কানি আগে যে কোন সুরে আগে হচ্ছে theta হচ্ছে. তাহলে আমরা জানি যে cos 90 টা কত হবে 0, cos 90 0 বলে w equals to minus pe, ये cos theta 2 जाके theta, ये cos theta 1 का 90 पुट करले cos 90 0 ए पार्ट तो ओमिट हिजबो बाकी होको ना माइनस pe cos, अर्थात ये जे cos theta आछी ये डॉट प्रोडक्ट ना क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट सॉरी ए टाउ टा के तो छुले pe माने एटा तो छुले mb अछि mb काहे मैग्नेटिक एरिया तो प्ले कोन आछी mb sin theta, इलेक्ट्रिक फील्ड ले तो हमरा प्ले कोन जनता ना p जनता मैग्नेटिक फील्ड से सिंपल कोन आछो mb आछो तो ये उसको mb तो सिंपल कोन हो mb, इलेक्ट्रिक फील्ड पाई p मैग्नेटिक फील्ड पाई कोन प्ले mb आछो बराबर minus m dot b and the dot product of two vectors is a scalar, so dot product is normal formula just scalar product. তা মানে আমি দেখিলে যে টর্কটা কেতে এক্সর্ট হচ্ছে that torque এক্সর্ট হচ্ছে mb sin theta কিন্তু পোটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলা হচ্ছে minus mb cos theta ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাই mb. এবার বলে আমরা স্পেশাল কেস করিবা এই যে w plus minus mb cos theta আছে কেস 1 যদি বলে থিটাটা তোমরা কেতে হবে 0 ডিগ্রি, দেখো যদি থিটা 0 ডিগ্রি হয় আমি কইবা cos 0 ভ্যালু তো 1 তেরো তাহলে সে জায়গায় পোটেনশিয়াল এনার্জি u টা কেটে দিব না, যদি থিটাটা 0 হয় cos 0 ভ্যালু 1 তো এই পাশে দেব সিম্পলি মাইনাস mb মাইনাস বা হচ্ছে তা মিনিমাম না মাইনাস মানে মিনিমাম আর এইটা কোথায় কোন স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম যে থিটাটা 0 হবে থিটা 0 মানে তারপর স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম এই কন্ডিশনটা না হলা স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম. যদি তোমরা কেস 2 যদি তোমরা থিটাটা কত হয়ে না 90 হয়ে থিটা 90 হলে cos 90 এর ভ্যালু কত 0 আর cos 90 এর 0 হইব তাহলে -mb * 0 so পোটেনশিয়াল এনার্জি 0 হবে আর এই কন্ডিশনটা কাজে 0 পোটেনশিয়াল এনার্জি केस 3 if theta equals to 180 degree, if theta 180 हुए तो cos 180 value कितने -1 और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मैच -mb अब cos 180 -1 तो -mb into -1 simply mb और पॉजिटिव रहा तो मैक्सिमम है मैक्सिमम माने ताला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम এই কন্ডিশনটা আমরা अनस्टेबल इक्विलिब्रियम তাহলে দেখো सिंपल কথা বলে ডট का फॉर्मूला है sin थीटा पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला -mb cos थीटा थीटा 0 হলে -mb मिनिमम और এই কন্ডিশনটা পাওয়া স্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম थीटा 90 হলে 0 এই কন্ডিশনটা হলো 0 পোটেনশিয়াল এনার্জি আর थीटा हो 180 তাহলে কা হবে +mb প্লাস मैक्सिमम তা কাজ অনস্টেবল ইকুইলিব্রিয়াম. ঠিক আছে বলে ये তোমার বলা তোমার টর্ক और पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्लास रे हमें आउ कुछ नुआ कंटेंट करी आसीबा. आज मैं भी थाउ जदी वीडियो टी पसंद लागुची वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे भूलियो.